Hello students, RN Classes is back with a discussion of another school paper. This video is for educational purpose only. Many of the questions get repeated from the previous year paper and even from other school papers as well. Use them. To score excellent marks, subscribe to our channel and get all the previous year school papers and even RN Classes papers also from class 8th to 12th, and press the bell icon to get all the regular updates. Like and share it with your friends. That would encourage us to bring you more learning material to you free of charge. Now, today's paper discussion is of Vivek High School half yearly exam conducted today on 8th October 2021. So, let's get on with the paper. So, it had two parts, section A, MCQs, and section B, subjective part. MCQs had 10 questions, 1 mark each, and subjective have 10 questions, 2 and 3 and 4 marks. Right? Jumping on to question number 1. Let's read it together. By what least number should 225 be multiplied to get a perfect cube? सबसे पहले ये देखते हैं 225 is a perfect cube or not. तभी तो हम देखेंगे कि भाई least number with which it should be multiplied. Let's see. Now the number is 225. How to check? Do prime factorization. Prime factorization 5. 4 is a 20 and 5 is a 25. Again 5. 9 is again 3 and 3. Right? So now 225 की prime factorization is 5 into 5 into 3 into 3, right? Now, is it a perfect cube? Perfect cube के लिए we have to see the triplet. यहाँ पे triplet बना? नहीं बना. Means triplet बनाने के लिए we have to multiply with 5. Triplet बन गया. Now 3 का भी triplet नहीं बना है. यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ pair बना. Again multiply with 3 so that the triplet is complete. So you are multiplying with 5 and 3. So answer is 15. You multiply this number with 15, it will become a perfect cube. So answer is A part. Question number 2. Which of the following is a false statement? अच्छा, false statement देखनी है. Okay. The diagonal of a rectangle are equal. The diagonals of a rectangle are equal. मैं rectangle बना लेता हूँ. Let's form a rectangle. This is our rectangle. Right. So this is the diagonal and this is the diagonal. Sorry, this becomes the diagonal, right? A, B, C and D. A, B, C, D becomes a rectangle. AC is the diagonal and BD is the diagonal. Diagonals are equal. Of course diagonals are equal. So this statement is correct. ये तो false हुई नहीं. This is true statement. The opposite sides of a rectangle are equal. Yes, this side is equal to this side and this side is equal to this side. Opposite sides are equal. This statement is also true. The diagonals of a rectangle bisect each other. Yes, this diagonal is bisected. This diagonal is also bisected. But in this, diagonals are also equal. Right? So this becomes true. Diagonals of a rectangle are perpendicular to each other. Okay? क्या ये आपको perpendicular दिख रहा है? Is this 90 degree? Let's see with this kind of rectangle, right? This is the diagonal, right? Is this 90 degree? No. So this is false. Answer is D part. The formula to find the number of diagonals of a polygon. Number of diagonals of a polygon. Okay, number of diagonals कैसे निकालते हैं? Let's see the polygon. I'll form the polygon and it goes on. Just ठीक है. See, if you take this vertex, will you be connecting this over here? No, this is not a diagonal. Will you be connecting this vertex over here? No, this will not become a diagonal. Will you be connecting this vertex with itself? No. आप इस वर्टेक्स को कहां कनेक्ट करोगे? इस वर्टेक्स के साथ, इस वर्टेक्स के साथ,
इस वर्टेक्स के साथ, इस वर्टेक्स के साथ, एंड सो ऑन, राइट? If there are n vertices, you are not going to connect it with itself and the adjacent vertices. So you are not going to connect it with 3 less vertices, right? 3 के साथ नहीं connect करोगे, so other vertices will be n minus 3. अब divided by, why divided by? अगर आप इसको यहां से इस vertex के साथ connect करोगे, right? आपने ये count कर लिया, this is one diagonal. Once you reach over here at this vertex, when you are counting from here, counting like this, right? आप इसको फिर से count कर लोगे because you will be taking it like this. So you will be taking it twice, divided by 2. So these are the number of diagonals in an n-sided polygon. So answer is C part. I've given you a brief explanation also. We have done it in the class. Let's jump on to question number 4. Which statement is false? Falseness check करनी है. Concave polygon has at least one diagonal outside the polygon. Okay, outside the polygon. एक concave polygon बना ही लेते हैं. See, this is my polygon. This is a concave polygon, right? So if you connect this vertex with this vertex, ठीक है, adjacent नहीं है, so this will form a diagonal. This is a diagonal. ठीक है, is it outside? Yes, it is outside. So this statement is true. Concave polygon has at least one interior angle greater than 180 degree. At least one. Yes, this is more than 180 degree. This statement is also true. Number of diagonals of a regular polygon is always less than the number of sides of a polygon. Octagon ले लेते हैं. Right? I'll take an example. Octagon. इसमें sides, n sides is equal to 8. Sides are 8. Okay. Diagonal. How many diagonals will be there? N into n minus 3 by 2. अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था हमने ये, right? N is 8 into 8 minus 3 is 5 by 2. So 2 4s are 8 means 5 4s are 20 diagonals. Okay, we got 20. The number of diagonals of a regular polygon is less than. Is it less? No. This is the false statement. Answer is part C. Not We don't have to check the part D. Answer हमें मिल चुका है, but then also we'll read it again. The sum of exterior angles of a polygon is 360. Of course it is true. Answer is C part. Jumping on to question 5. Cube of a negative number is, okay, negative number का cube. This is a negative number. इसका मैंने cube करना है. So negative number into a negative number, right? Into a negative number, because we are doing cube. Up, negative into negative will become positive. It will become a positive number into a negative number. Again, positive into negative, negative number, right? Negative number बन जाएगा तो part. Now, answer is B part. Question 6. Sum of all interior angles of a regular polygon of 12 sides. Sum of all interior angles. Okay. 12 sided polygon है, n is equal to 12. 12 sided polygon है हमारे पास, right? अब polygon की हमें interior angles निकालने तो आते नहीं, but हमें triangles क्या आते हैं? Can we divide it into number of triangles? How many triangles will be there? Triangles will be n minus 2. N minus 2 triangles will be there, and angle sum property say each triangle will consist of 180 degrees into 180, right? So n is 12, 12 minus 2 into 180 means 10 into 180 means it is 1800 degrees. Part B. Such a simple one, you can do it. What is the number of sides of a regular polygon? Okay, number of sides of a regular polygon having measure of one interior angle 140 degree. Up. Regular polygon, वन इंटीरियर एंगल निकालना है. ओके, नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, राइट? इंटीरियर एंगल, हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आता है n माइनस 2 इंटू 180. अब रेगुलर पॉलीगन के अंदर ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स मींस नंबर ऑफ एंगल्स n.
this gives us interior angle. Interior angle हमें दिया भी हुआ है 140 degrees. Right? Just solve it. It's linear equation in one variable. Bring all the n terms on left hand side and all the constant या numbers on the right hand side. Right? सबसे पहले cross multiply n minus 2 into 180 is equal to 140 n. Right? Distributive property से खोलो 180 n minus 360 is equal to 140 n. Right? Side change 180 n यहां पे प्लस 140 था, इधर आके माइनस 140 n हो जाएगा, is equal to 360. This becomes 40 n becomes 360. n is equal to 360 by 40. So 0 cancels, 4 9s n is equal to 9. How many sides are there? 9. Part A is the right one. Question number 8. Cube of this number. Okay, cube of this number. पहले हम नंबर तो निकाल लें. नंबर निकाल लेते हैं. नंबर हमारे पास कैसे बनेगा? 3 minus 1 by 3. You have to take the LCM. LCM is 3. यहां पे एक्चुअल में 1 ही है. 1 3 times 3 3s are 9 minus 1 becomes 8 by 3. The number is 8 by 3 and we have to do cube of this number. So this will become 8 cube by 3 cube. 8 cube is 512 and 3 cube is 27. Answer is 512 by 27, D part. Such a simple one. Question number 9. Right. Up. Cube root of 343 minus cube root of minus 125. Okay. अब cube root of 343 लेना है मुझे. Right. Minus cube root of a negative number 125. Right. अब मुझे यहां पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका अगर मैं क्यूब करूं तो 343 बन जाए. राइट. अब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 3. कैसे बनेगा? अगर मैं 1 करता हूं तो 1 रह जाएगा, 2 करता हूं तो 8 बन जाएगा, 3 लेता हूं तो 7 बनेगा, 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343 means 7. Cube root of 343 is 7 minus अब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव आया तो नेगेटिव नंबर ही रहेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव. 125 अभी तो किया था, 5 क्यूब इज 125, तो क्यूब रूट ऑफ माइनस 125 इज माइनस 5. 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 becomes 12. B part is the right one. Question number 10. Which of the following statement is false? Right? Cube of an even natural number is also even natural number. Okay? Cube of an even natural number, right, is an even natural number. Even number देखें, एक even number लेते हैं, उसका cube करते हैं. Even into even into even, right? यही हुआ. Just an example. 2 का 2 into 2 4, 4 into 2 8. अगर 4 का ले लो, 4 into 4 16, 16 into 4 64. Even into even will always become even, right? And even into even will always become even, right? So final answer would be even. So even natural numbers. So this is again true. Again इन्होंने पूछा क्या है? False यार. Cube of a number ending with 3, okay, and with 7. अब एक नंबर है मेरे पास, कोई भी नंबर, यूनिट प्लेस पे उसके 3 है, मैं इसका क्यूब करूंगा, राइट. आई विल गेट द नंबर ऑफ कोर्स. अब अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो यूनिट प्लेस पे 3, राइट, इनटू यूनिट प्लेस पे अगेन 3, इनटू यूनिट प्लेस पे अगेन 3. इन 3 नंबर्स का 3 into 3 9, 9 3s are 27. तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 7. The statement is true. अच्छा, यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 36 is 6. Let's see. 36 into 36. मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है into 36, राइट. पहले हम इन दोनों का
मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 36 मीन 6 इंटू 6 36 आगे कुछ भी आए आई डोंट केयर मेरे को तो यूनिट डिजिट से मतलब है देन अगेन यूनिट डिजिट 6 इंटू 6 we'll get 6 again we got 6 again true this statement is also true means this statement is false answer is D part but cube of a number ending with 0 has 2 0 at its extreme right कर लेते हैं यार क्या फर्क पड़ता है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0 कोई भी नंबर ले लेते हैं 70 राइट 70 का क्यूब राइट ये कह रहा है 0 कितनी होंगी 2 zeros at extreme right let's see 70 cube is 70 into 70 into 70 right okay 70 into 70 how much it would be 4900 into again 70 okay 4900 into 70 कितना हो जाएगा 343 and 1 2 3 3 zeros 1 2 3 अब ये कह रहा है there will be 2 zeros मैं कह रहा हूं there will be 3 zeros so this statement is false we found out a solution जिसमें 3 zeros दिख रही है मुझे we got it so now this concludes the objective part of the paper if you like the video so please share it with your friends subscribe to our channel and you can even like and comment in our video straight away jumping on to the subjective part of the paper section B subjective now this is of 30 marks now subjective paper means हर एक चीज properly आपको लिखनी पड़ेगी right find the Pythagorean triplet whose one member is 22 Pythagorean triplet लिखना है one member is 22 okay we know Pythagorean triplets we know लिखना पड़ेगा we know क्या पता है हमें 2m m square minus 1 and m square plus 1 are Pythagorean triplets you have to write this line it's of 2 marks and you have to replicate it right Pythagorean triplets so one member is 22 let's take the first member let's 2m be equal to 22 right so m becomes 22 by 2 means m becomes 11 right check kar lo right so now m is 11 my Pythagorean triplet would be 2m m square minus 1 and m square plus 1 right so 2 into m 2 into 11 so first one is 22 right next one 11 square minus 1 second one 11 square is 121 minus 1 is 120 right next one 11 square plus 1 11 square is 121 plus 1 is 122 sorry 122 22 120 and 122 right this is a Pythagorean triplet now take the next one then m square minus 1 becomes 22 अब मैंने m square minus 1 को 22 ले लिया so m square will become 22 plus 1 23 now I have to find m की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका स्क्वायर करूं 23 बन जाए can you find it no यहां से no triplet because we couldn't find m right then last one m square plus 1 is equal to 22 right so m square is equal to 22 minus 1 so it becomes 21 m is equal to ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर करूं 21 बन जाए मिलेगा no so again we couldn't find m so no triplet right so ये क्वेश्चन पूरा हो गया you got full 2 marks but you have to write these two also important तभी 2 marks मिलेंगे question number 2 okay due to lockdown many families got abundance of good time to stay indoors and was together the whole day one family near my house played indoor games with rolling 2 dices excellent 2 dices find the probability of getting a doublet an even number okay अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट या प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो लिखे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. What is the probability of an event? Okay, a probability of an event is total number of possible outcomes and total number of favorable outcomes. Right? Total number of favorable outcomes यहां पे आ गए. Okay. अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है. अब 2 dice are rolled, right? So we have to find total number of possible outcomes. क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, दूसरी डाई पे 1 आ जाए, फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, दूसरी डाई पे 2 आ जाए, फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, दूसरी डाई पे 3, फर्स्ट डाई पे 1, दूसरी डाई पे 4, फर्स्ट डाई पे 1, दूसरी डाई पे 5, फर्स्ट डाई पे 1, दूसरी डाई पे 6. All these. Next 2, then 1, then 2, then 2, and so on. Last one would be 2, then 6. First die and second die, right? First die पे 3, second die पे 1. So it goes on. Last would be first die पे 3, last die पे 6. Next one, first die पे 4 भी आ सकता है, first die पे ना, second die पे 1. Next, same, it goes on similarly, and it would be first die पे 4, next die पे 6. Okay. First die पे 5 आ सकता है, then 1. Then it goes on in the same way. 5, 6 in the last one, and last one would be 6 1, 6 2, 6 3. You know how I'm writing this: 6 4, 6 5, and 6 6. Right? Die 1 and die 2. These are the total number of possible outcomes. Right? कितने outcomes हैं? We'll count it out: 1 2 3 4 5 6, and over here 1 2 3 4 5 6 means 6 into 6, we got the total number of possible outcomes be 36. Now we have to just find the favorable one, right? So first question करते हैं. हमें possible तो मिल चुके हैं, right? अब a doublet probability. First one, getting a doublet. Right? The formula gets repeated. Total number of possible outcomes, we got it 36. Favorable outcomes. Doublet कब होगा? Either 1 1 पे, or 2 2 पे, or 3 3 पे, यहाँ लिख लेते हैं 3 3 पे, or 4 4 पे, or 5 5 पे. It's a doublet. Or 6 6. How many are there? 1 2 3 4 5 and 6. How many doublets will be there? 6. Means answer would be 1 by 6. Such a simple one. Next, एक बारी probability सीख लो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, समझ आना शुरू हो जाए तो. Right? Next one. An even number on first and prime number on the second. Right? Okay, probability. Getting even number on first die and क्या आया था? प्राइम नंबर ऑन सेकेंड डाई. राइट? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वी नो इट वुड बी 36. अब फेवरेबल ही निकालने हैं सिर्फ. इवन ऑन द फर्स्ट, इवन ऑन द फर्स्ट, इवन कहां आएगा? दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन. राइट? तो इसकी लाइन में सारे जितने भी हैं, राइट, इस लाइन में, इस लाइन में ये सारे फर्स्ट डाई इज इवन. I've marked it. Even on the first. But
prime number on the second die. Prime number, even on the first, prime number. 2 is a prime number, right? Again, 2, 3 is a prime number. Yes, we'll get this. 2, 4, no. 2, 5, yes. So मुझे ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला. Again, we'll get the same one. 4, 2, 4, 3, sorry, 4, 3, and 4, 5. I'll make it something new. I'll make it triangles, right? नहीं तो पता नहीं चलेगा. We have to count it later on. I'll make it triangles, right? The last one would be 6, 2, 6, 3, and 6, 5. So how many triangles were there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 favorable outcomes. So 9 favorable outcomes. So 9 4s are 36. Answer is 1 by 4. समझ लो probability का question कभी गलत नहीं होगा. Right? Jumping on to the next one. Okay. Find the square of 98 using identity. Square of 98 निकालना है. अब square of 98 we have already done it in the class. 1 से 125 तक के squares आपको आते हैं. 98 का square कैसे आएगा? 100 minus 2 means 100 minus 4 means 96, and again 2 का square is 4. 9604 is the answer. We know that. But हमें तो identity use करनी है. 98 का square कैसे बनेगा? 100 minus 2 का square. Right? Actually यही identity सोची दिमाग में और solve करके मैंने भी आंसर बोल भी दिया था. Same identity. You can do it in your head. You are capable enough. चलो अब identity से करते हैं. A minus B whole square. अगर हमने ये करना भी है, A minus B whole square. Write down the formula as well. A square. अब minus 2AB plus B square plus B square. So A क्या है? 100 का square minus 2 into 100 into B क्या है? 2 plus B का square. B क्या है? 2 का square. Right? So we got it 100. यहाँ पे हम लोग left hand side पे same ही चलेगा. 100 minus 2 का square. 100 का square 1 and 4 zeros. 100 का square is 10,000 minus 2 2s are 4, and it comes out to be 400 plus 2 का square is 4. So 10,000 minus 400 is 9600 plus 4. So 9604. Formula के marks हैं. Formula जरूर लिख देना to get full 2 marks. Question 4. Up now this is of 3 marks. Right? Up. Solve the value of the variable. Variable क्या है यहाँ पे? X. देखो यहाँ पे भी X, यहाँ पे भी X. इसको solve करना है. ध्यान से solve करते हैं. Means linear equation in one variable. That's it. छोटा सा question है linear equation in one variable. What we have to do when you get a linear equation in one variable? All the x terms on left hand side and all the numbers on right hand side. That's what we do. Right? इसको भी हम वैसे ही treat करेंगे. First write down the question. 9x plus 7 by 2 minus x minus x minus 2 by 7 is equal to 36. Right? This is the one. Up. सबसे पहले क्या करोगे? We have to solve the bracket. Right? Bracket को solve कर लेते हैं. It would be easier for us. So LCM would be 7. Right? Outside it would remain the same. 9x plus 7 by 2. It remains the same. Minus वैसे का वैसे ही. Bracket starts. LCM 7. अब यहाँ पे actual में 1 है तो 1 7 times, so 7 into x, 7x minus x minus 2. You have to write down this step, otherwise it will become wrong. आपका sign change करना पड़ेगा ध्यान से. So 9x plus 7 by 2, right, minus, up, LCM is 7. This becomes 7x minus x and plus 2. Minus into minus is plus 2. That comes out to be 36. So 9x plus 7 by 2 minus 7x minus x is 6x plus 2 by 7. Right? This becomes 36. Now, यहाँ पे आपके पास number है, यहाँ पे भी number है. First, what you can do is take LCM. LCM is 14. Right?
2 7 times, so 7 into 9x plus 7. Minus is there, sign would change. So 7 2 times, so 2 into 6x plus 2. That is equal to 36. What we can do is cross multiply, right? Cross multiply करेंगे तो right hand side में तो 36 into 14 बन जाएगा, right? और left hand side में we'll open the bracket, distributive property, 7 into 9 63x, 7 into 7 plus 49 minus 2 6 12 minus 12x. Now 2 4s are, no, 2 2s are 4, so minus into plus is minus 4, right? Up 63 minus 12, how much it would be? 51x plus 49 minus 4 is 45, and 36 into 14 would come out to be 504. 45 के side change करो, 51x will be equal to 504 plus 45. प्लस था, यहां जाके क्या हो जाएगा? ये गलती नहीं, minus 45. Be very careful about it. 51x would become 459. 504 minus 45, do it, you'll get the answer x. Up, cross multiply, 459 divided by 51. 51 how many times? One time, and 51 yahan pe 9 times, so x would come out to be 9. Answer. If you do all the steps correctly, you will get full 3 marks. No one can deduct it, right? Question number 5. In an inter-house mathematics quiz, okay, the orator asked a question. 7 times a number is added to 2 by 3, and that becomes equal to 3. Find the reciprocal of the number and win a golden star. Will you be able to get a golden star? Yes, definitely I'll be able to get a golden star. Let's see. In an inter-house mathematics quiz, solve kar lete, golden star to mil hi jayega. The orator asked a question. 7 times a number. Okay. Do we have the number? No. Let the number be x. मैंने नंबर को ले लिया x. Is added to 7 times the number is added to 2 by 3. 2 by 3 में मैंने add करना है 7 times the number. 7 times the number is x, and the answer would be 3. Okay. Now find the reciprocal of the number. Reciprocal of the number. ये मुझे निकालना है. Reciprocal of the number I have to find. तभी तो गोल्डन स्टार मिलेगा. ठीक है. Reciprocal of the number निकालने के लिए नंबर है x, means x की वैल्यू निकाल लो. Reciprocal of the number निकल गया. x की वैल्यू निकाल लेते हैं. What is this? Linear equation in one variable. How to solve it? X terms should be on the left hand side and all the numbers should be on the right hand side. That's it. Right. So 7x तो left hand side पे ही रह जाएगा. Up. 3 right hand side पे. 2 by 3 from left hand side we have to put it on the right hand side. So plus 2 by 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा? Minus 2 by 3. Right. तो 7x is equal to, up, LCM is 3. 3 3s are 9 minus 2. So 7x is equal to 9 minus 2 is 7 by 3. Right. So x is equal to, अब 7 की साइड चेंज करनी पड़ेगी ना. डिनोमिनेटर में जाएगा 7 by 3. Denominator में 7 भी आएगा. 7 on the 7, 7 on the 7. Now the number I got is 1 by 3. So number is equal to 1 by 3. So what would be the reciprocal? Reciprocal would be 3. Answer is 3. That's it. Will you be able to get the golden star? Yes. लिख देना था वहां पे. Yes, I can get a golden star. Mathematics is an easy subject. Golden star तो मिलेगा ही. Golden star. Right? Let's move on to the next one. Question number 6. Find the greatest 5-digit number that is a perfect square. Okay. Greatest 5-digit number की वो बात कर रहा है जो perfect square भी हो. Okay. Perfect square तो बाद में निकालेंगे. पहले तो मैं लिख लेता हूं.
greatest 5-digit number. Greatest 5-digit number. क्या है greatest 5-digit number? 9 9 9 9 9. कितने बार 9 आएगा? 5 times. Of course, this becomes the greatest 5-digit number. इसका next number होगा 6-digit number, right? So ये तो greatest 5-digit number. अब we have to find out it has to be a perfect square. Is it a perfect square? We don't know. मतलब कि इसमें से कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट बाद में करना पड़ेगा. What method should I apply? Prime factorization? No. We should do long division method. अगर मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना हुआ हम कर देंगे long division method. Right? सबसे पहले हम चेक करते हैं it's a perfect square or not. अगर perfect square नहीं है, we'll subtract the remainder what we get. We'll get the answer. Right? चलो अपना long division method करते हैं. 9 9 9 9 9. सबसे पहले pairs. First pair, second pair. इसका pair पूरा नहीं बना, but we'll take one. So, first one. 3 into 3 is 9. Minus. So यहां पे आ गया 0 and now 99 is dropped down. अब 3 का डबल 6. Now यहां दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए and it will be multiplied. क्या करूं? 61 one times. It will become 61. Subtracted 9 minus 1 8, 9 minus 6 3. ठीक है? 38 and again 99 is dropped. Okay? Now 31 का डबल 62. यहां पे भी नंबर, यहां पे भी नंबर. कौन सा नंबर डालूं यहां पे? Check it. Number would be 6. So 626 into 6 would be 3756. Right? Subtract it. You would get 3, 4 and 1. 143. You'll get 143. Remainder आ गया 143. Means हमें पता था 99999 means 5 times 9 is not a perfect square. तो 143 हमारे पास रिमाइंडर आ गया. We have to subtract it. So 9 9 9 9 9. Subtract 143 from it to make it a perfect square. 143 को subtract किया. 9 minus 3 is 6. 9 minus 4 is 5. 9 minus 1 is 8. 9 9. So 99,856 is a perfect square. Perfect square is a greatest 5-digit. तो भूल ही गए, लिखना पड़ेगा. Greatest 5-digit is the greatest 5-digit perfect square. That's it. All 3 marks are yours. Question number 7. Find 3 rational numbers between these two numbers. अब मेथड भी बता दिया उसने, मीन मेथड. राइट, चलो देखते हैं. मेरे पास नंबर्स लिखने हैं मैंने. ठीक है, यहां पे लिखा -2/3 which becomes very easy actually. -2/3 would be smaller than 1, so मैंने यहां पे लिख लिया. ठीक है, अब I have to find 3 rational numbers using mean method. How to find? हम लोग मिडिल मोस्ट तो निकाल ही सकते हैं मीन मेथड से. How to find the middlemost number using mean method? Mean method कैसे? -2/3 plus 1 divided by 2. This is the mean method. Right? So LCM ले लो. 3. यहां पे आया -2 plus 3 by 2. Right? यही आएगा. -2 plus 3 is 1/3 whole divided by 2. This is going on. So 1/3 2s are 6. ये हमारा मिडिल मोस्ट नंबर बन गया. मीन मेथड से वी फाउंड आउट 1 रैशनल नंबर. कैन वी फाइंड द अदर रैशनल नंबर्स आल्सो? यस, we'll write it on the other page. Let's see. यहां पे लिखते हैं. Right? -2/3 1. Middlemost number we found out to be 1/6. Right? Now अभी भी 2 नंबर्स निकालने हैं. We can find a number over here. पहले ये वाला नंबर निकालते हैं. कैसे आएगा? -2/3 plus 1/6 divided by 2 using mean method. Right? LCM would be 6. 3 2s are 6, so 2 2s are 4, -4 plus 1 whole divided by 2.
right? Next, minus 4 plus 1 is minus 3 by 6 whole divided by 2. So 3 ones are 3, 3 twos are 6, minus 1 by 4. So this number would be minus 1 by 4. एक और नंबर मिल गया. We have to find 3. हमें दो तो मिल चुके हैं ऑलरेडी, राइट? अब थर्ड वन कहां पे होगा? यहां पे, इन दोनों के बीच में. मीन मेथड से हम ये भी निकाल लेते हैं. हाउ टू फाइंड आउट? 1 by 6 plus 1 whole divided by 2, right? अब whole divided by 2 तो वैसे ही है. Take the LCM. 6 1 plus 6. So this would come out to be 7 by 6 whole divided by 2. तो 7 by 12. 7 by 12. So ये आंसर आ गया आपके पास 7 by 12. You found out this one as well, right? So three numbers with mean method you found out: minus 1 by 4, 1 by 6, 7 by 12. These are the answers, right? Question number 8. The helmsman was on official duty to drop doctors to a nearby coastal village by his steamboat. Okay, he has a steamboat. The doctors were directed to vaccinate people of that district. The steamboat goes downstream, okay, goes downstream and covers the distance between two ports in 5 hours and covers the same distance upstream in 6 hours. Okay, speed of stream दी हुई है 1 kilometer per hour. Find the speed of steamboat, okay, and distance covered upstream. That's it. 4 marks. Important one. 4 mark question. Let's see. ये ले लेते हैं पोर्ट A and ये ले लेते हैं पोर्ट B. Bigger port, right? A से B. Now steamboat, अब stream is flowing in this way. देख लो. So this would be downstream. Downstream, right? And it is covered in time is equal to 5 hours. कब लगेगा टाइम, right? This is going upstream. ठीक है, time would be covered. Time covered is 6 hours, right? लिख दिया मैंने. अब now अगर आप ध्यान दो, स्पीड ऑफ स्टीमबोट निकालनी है, मीन्स हमें कोई ना कोई रिलेशन तो चाहिए. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट अ वे so that we can get an equation. इक्वेशन बन गई, हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया, राइट? अब डिस्टेंसेस की बात कर रहा है. डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी या अपस्ट्रीम डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, वुडंट इट बी सेम? डिस्टेंस ए टू बी, पूरा लिख देते हैं, ए टू बी would be equal to distance B to A, right? अब distance तो मुझे पता भी है, distance is equal to speed into time, right? And यहां पे speed into time, you know that, right? अब speed किसकी? Speed of steamboat डाउनस्ट्रीम, ये उसकी स्पीड है. और यहां पे स्पीड ऑफ स्टीम बोट अपस्ट्रीम. इनटू टाइम है, टाइम मेरे पास ऑलरेडी है, ये टाइम भी मेरे पास ऑलरेडी है, राइट? सो डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं. स्पीड ऑफ स्टीम बोट डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए, स्पीड ऑफ स्टीम बोट तो मुझे निकालनी है इन स्टिल वाटर, ओके. अब मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, ये तो मुझे दिया हुआ है, राइट? अब स्पीड ऑफ स्टीम बोट that has to be found. तो मैं स्पीड ऑफ स्टीम बोट को ले लेता हूं, आगे लगाओ, लेट स्पीड ऑफ स्टीम बोट बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मेरे को तो स्पीड ऑफ स्टीम बोट चाहिए. अब स्पीड ऑफ स्टीम बोट डाउनस्ट्रीम, ओके, ये निकाल लेते.
speed of steamboat downstream. क्या होगा? x स्पीड ऑफ स्टीम बोट प्लस 1 डाउनस्ट्रीम है, ऐड हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर. राइट, अब नेक्स्ट निकालते हैं. स्पीड ऑफ स्टीम बोट going upstream. Right, so it would be subtracted x minus 1 किलोमीटर पर आवर. बस ये भी आ गया, नेक्स्ट भी आ गया, पंच इट इन द इक्वेशन. राइट, अब स्पीड क्या थी? x प्लस 1. टाइम कितना था? 5. राइट, यहां पे क्या था? x माइनस 1. टाइम कितना था? 6. राइट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट. सो कुछ भी नहीं करना है आपने. व्हाट डू यू हैव टू डू? यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. x into 5, 5x. 1 into 5, 5 is equal to x into 6, 6x minus 6. Now, x की टर्म्स सारी लेफ्ट हैंड साइड पे. 5x minus 6x minus 6x minus 5. Right, on the right hand side. So minus x is equal to minus 11. So x is equal to 11 means speed of steamboat is equal to 11 kilometer per hour. I found out. Right, एक चीज तो मिल गई. Let's find out the other one also. Distance covered by helmsman upstream. So distance covered upstream, B to A. Right, distance covered upstream. कितना डिस्टेंस है? स्पीड इंटू टाइम. अब स्पीड किसकी? 11 minus 1. Time is 6 hours. Right, 10 into 6, 60 kilometer. Right, distance covered upstream is 60 kilometers. This is the answer. All 4 marks are yours. Next one. A businessman wants to set up a clothing mall in his native place, okay, where people of different states live together happily. Okay, he sent his assistant there to get the exact number of these people. The below table shows the same. Right, Marathi, Bengali, Gujarati, South Indian, North Indian, NRI. Represent the above table in a pie chart. Pie chart बनाना है, elaborate and clearer understanding. ठीक है, पाई चार्ट बनाना है मैंने, and it's a 4 marker question. अब पाई चार्ट बनाने के लिए what do you need? पाई चार्ट बनाने के लिए we need central angles. ठीक है, and central angles के लिए what do we need? Fractions. That's it. टेबल ही बनाना है, that's it. चलो बना लेते हैं टेबल. राइट, बनाते हैं. यहां पे लिखें states, number of people, ठीक है, fraction, and यहां पे central angle. राइट, अब स्टेट्स. स्टेट्स कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, गुजराती, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, एनआरआई. लिख लेते हैं. मराठी, बंगाली, नेक्स्ट इज गुजराती, नेक्स्ट इज साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन,
and NRI. This is it. Now, number of people. Marathi kitne the? 1000. Now, Bengali would be 900. Gujarati would be 1100. South Indian would be 2000. And North Indian would be 1500. And NRI are 700. We have to find out the fraction. Fraction कैसे लिखेंगे? 1000 by total number. Total number तो निकालना पड़ेगा. 1000 plus 900 plus 1100 plus 2000 plus 1500 plus 700. The total is 7200. This comes out to be total. Right? ये अलग है. This is total. So 1000 by 7200. Fraction would be 5 by 36. Next one. 900 by 7200. Fraction would be 1 by 8. Right? Next. Gujarati में 1100 by 7200. Fraction would be 11 by 72. Right? Next. 2000 divided by 7200. The answer would be 5 by 18. Next, 1500 by 7200. Answer would be 5 by 24. And 700. Fractions लिख रहा हूं मैं फटाफट. इतनी तेजी आपसे काम से होना चाहिए भाई. इतना ही तेज. 7 by 72. Right? These are the fractions. Now we'll find out the central angles. 5 by 36 is the fraction into the total angle 360. I want to find the angle of Marathi people. Okay? Angle would be 50 degrees. Right? It should be neat and tidy. इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है? 1 by 8 is the fraction into 360. Central angle कितना हो जाएगा भाई? बोलो 45. Right? Up 11 by 72 is the fraction into the central angle is 360. Central angle अब मेरा निकलेगा इस पे 55. Neat and tidy. यहां पे कटिंग नहीं करनी है. इन आपका ये जो टेबल है बिल्कुल नीट एंड टाइडी होना चाहिए. इस पे कटिंग नहीं होनी चाहिए. अब 2000 by 7200 would be अब fraction is 5 by 18. Center पे 360 degree है. Means the central angle we'll get is 100 degrees. Right? Up next is 5 by 24 into 360. Now we'll get the central angle as 75 degrees. Right? And the last one, 7 by 72 is the fraction into 360. And the last central angle would be 35 degrees. आपके पास सेंट्रल एंगल्स आ चुके हैं. पाई चार्ट तो आप बना ही सकते हो. लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट. लेट्स लुक इट ओवर हियर हाउ आई एम प्रिपेयरिंग इट. देन यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट वेरी इजीली. ठीक है? ये मैंने पाई चार्ट बनाया. सर्कल आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है? दिस आई मार्क द सेंटर. फर्स्ट आप इसको कनेक्ट करोगे. ठीक है? यहां पे डी रखोगे एंड यू विल मेक इट एज 50 डिग्रीज. ठीक है? देन यू विल मेक इट एज 45 डिग्रीज, देन 55 डिग्रीज, 100 degrees, and 75 degrees and 35 degrees, right? So on. You'll mark it. The final result will seem something like this. Marathi, Bengali, Gujarati, South Indian, North Indian, and NRI. The central angles, ऐसे ही marking करोगे, you will get full marks. Right? So jumping on to the last question of your test, subjective part का भी last question. 4 marks, थकना नहीं है, 4 marks लेके छोड़ने हैं ये भी. It's an easy question, not a difficult one. Right? 10th question. A closed metallic cylinder box. अब cylindrical box है. ध्यान से closed metallic बोलने के बाद ना उसने एक छोटा सा वर्ड यूज कर दिया cylindrical box. ठीक है? 1.25 मीटर हाई. ओके, हाइट दी हुई है. H दिया हुआ है 1.25 meters. Right? And it has a base whose radius is 35 centimeters. Radius is also given. 35 centimeter. If the sheet metal cost 90 per meter square, okay, cost
is also given rupees 90 per meter square. This is also given. Find the cost of material used in a box. Cost of material. I have to find cost of material and capacity of box in liters. Capacity भी निकालनी है, तो कोई पार्ट मिस नहीं करना है, कैपेसिटी भी निकालनी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालते हैं। हाउ विल यू फाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल? अब जितना मटेरियल यूज होगा मींस एरिया, एरिया से मुझे मटेरियल मिल जाएगा, राइट अब मटेरियल, अब पहले तो सबसे पहले मैं सिलेंड्रिकल बॉक्स देखता हूं। यह आया मेरे पास सिलेंड्रिकल बॉक्स, राइट ये आया मेरे पास सिलेंड्रिकल बॉक्स। अब इसके अंदर रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, राइट रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। अब वो कह रहा है मटेरियल यूज करना है, क्लोज्ड भी बोल दिया उसने, क्लोज्ड भी वर्ड यूज कर लिया, मींस ये सारा का सारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो सारा का सारा मटेरियल यहां पे यूज होगा, प्लस टॉप प्लस बॉटम। समझ लो कैसे लिख रहा हूं मैं, टॉप भी यूज हो रहा है, बॉटम भी यूज हो रहा है, मींस मेरे को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमें आता है, बट फॉर्मूला किसको याद रखना है? टोटल सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आता है? 2 पाई आर इंटू एच, राइट 2 पाई आर इंटू एच, ये तो आपका सारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ऐसे, प्लस टॉप का एरिया, टॉप का एरिया कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर से, ठीक है ये सर्कल ही तो है, बॉटम में भी तो सर्कल ही है, पाई आर स्क्वायर से ही आएगा, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया? 2 पाई आर एच, ये तो वैसे का वैसे ही है, प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, राइट बस 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लगा दो, अगर नहीं याद है बना लो। मैंने तो भाई नहीं कराया, अपने बच्चों को नहीं कराया, वाई? बिकॉज याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब 2 इंटू पाई इज 22/7, वी गॉट इट। अब आर, अब ध्यान दो मैं आर यहां पे देख रहा हूं 35 सेंटीमीटर दिया है, एंड हाइट देख रहा हूं 1.25 मीटर, एक ही चीज होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर या मीटर, राइट। अब कॉस्ट दी हुई है 90 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, मींस हमें रेडियस को मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूंगा? 35/100 मीटर्स। सो रेडियस को मैंने लिख लिया 35/100, एज सिंपल एज दैट, राइट। एच मुझे दिया हुआ है 1.25 प्लस 35/100 इज द रेडियस। सॉल्व इट टू गेट इट टोटल सरफेस एरिया। आराम से लिख लेते हैं, 2 इंटू 22 into divided by 7 into 35/100, right? LCM 100, this would come out to be 125 plus 30। next page चलते हैं, ठीक है। total surface area, we'll do it on this side। कैसे आएगा? 2 into 22/7 into 35/100 into ब्रैकेट में ही है, लेट्स सी 125 plus 35 is 160/100, right? So total surface area, we'll find it out, 7 1 the 7, 7 5 the 35, okay। अब 5 अभी कटेगा, 0 यहां से काट दिया, 5 0 यहां से काटा, 5 2 is 10, 2 1 is 2, 2 1 is 2, okay। now do not do it 22 into 16/100, पहले 22 into 16 निकाल लो, easily मिल जाता है। what is 22 into 16? 352,
divided by 100 is 3.52 meter square. This is total surface area. मुझे कॉस्ट दी हुई है. How much is cost? Cost is 90 rupees 90 per meter square. So अब मुझे निकालना क्या है? Cost of material. So what would be the cost of material? Total surface area is 3.52 into 90 per meter square. So answer would be, cost of material would be 316.8 rupees. ठीक है. So cost of material तो मुझे मिल गई. अब लास्ट पार्ट, ये भी ध्यान से, कुछ बच्चे भूल जाएंगे, कैपेसिटी. अब कैपेसिटी कैसे आएगी? ऑफ कंटेनर, ऑफ सिलेंडर. कैसे? वॉल्यूम से भाई. ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है. पाई इज 22/7. आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 35/100. इसका स्क्वायर इंटू व्हाट इज एच? एच इज 1.25. इसका भी एक ही बार में हम प्रॉपरली लिख लेंगे. 22/7 इंटू 35/100 इंटू 35/100 इंटू 125/100. राइट. 7 1 the 7 7 5s are 35. ओके. अब कहीं और पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. 5 20 टाइम्स. सो 2 11 टाइम्स, 2 10 टाइम्स. अब मुझे नंबर चाहिए सीधा. देखो नीचे तो 5 zeros आ रही हैं. You have to multiply 125 into 35 into 11. What would be the number? 48,125. This would be the number. करके देख लो चाहे. Divided by 1 2 3 4 5. Right. So answer would be 0.48125 meter cube. ठीक है. This is the volume. So this concludes your test, Vivek High School, Chandigarh, Class 8th half-yearly examination conducted today on 8th. If you like the video, please share it with your friends. Subscribe to our channel and press the bell icon to get this kind of valuable content which can be used in your future exams. All the very best from my side, from RN Classes. Thank you guys. Bye-bye.